नमस्ते दोस्तों, मैं हार्दिक हूँ और अभी अभी हमने अरावली के पहाड़ों को पीछे छोड़ दिया है। अब हम पूरी तरह से गुजरात स्टेट हाईवे पर हैं। सड़क पर टायरों की हल्की गूंज एक लगातार धुन पैदा कर रही है, जो घुमावदार पहाड़ी रास्तों के बाद काफी सुकून देने वाली है। यहाँ परिदृश्य फिर से खुल गया है, क्षितिज तक फैले हरे भरे खेत, जिन पर कहीं कहीं सफेद पुते घरों के झुंड और उनके रंग बिरंगे दरवाजे नजर आ रहे हैं। जून की शुरुआत में भी हवा में थोड़ी गर्मी है, लेकिन ये पहाड़ों की बेतरतीब हवा से अलग, अधिक शांत और परिचित सी लगती है। थोड़ी देर पहले हाईवे किनारे जिस ढाबे पर हमने चाय का ब्रेक लिया था, वो एक असली गुजराती हाईवे अनुभव था। कड़क मीठी चाय की खुशबू तली हुई पकौड़ियों की तीखी महक के साथ घुल रही थी। ट्रक ड्राइवर, जिनके चेहरों पर लंबी यात्राओं की कहानियां एच्ड थीं, गर्म चाय की चुस्कियों के साथ जोरदार हंसी मजाक कर रहे थे और एक दूसरे से रास्ते के हालचाल पूछ रहे थे। हवा में एक अनौपचारिक भाईचारा सा था, राज्य की इन महत्वपूर्ण धमनियों पर एक साथ यात्रा करने का एहसास। उस छोटे से ठहराव ने न केवल हमें शारीरिक रूप से तरोताज़ा किया, बल्कि इन सड़कों के किनारे रोज़मर्रा की जिंदगी की एक झलक भी दी। चाय से तरोताज़ा होकर और मन को हल्का करके हम फिर से चल पड़े। हाईवे पर नज़ारे एक फिल्म रील की तरह सामने आ रहे थे। आसपास के खेतों में ट्रैक्टर धीमी गति से चल रहे थे, उनके ड्राइवर रंगीन पगड़ी से छाया किए हुए थे। चमकीले रंग की साड़ियों में महिलाएं सड़क के किनारे चल रही थीं, सिर पर बोझ उठाए हुए, एक सहज सुंदरता के साथ। कभी कभी एक चमकीले रंग का ट्रक, जिस पर बारीक लोक कला और हर जगह लिखा हॉर्न ओके प्लीज होता था, गरजते हुए आगे निकल जाता। उसका एयर हॉर्न एक छोटी लेकिन जोरदार आवाज करता। छोटे मंदिर और सड़क के किनारे बनी दरगाहें, खुशहाल रंगों से सजी और गेंदे के फूलों की मालाओं से लदी, गुजरते यात्रियों को मौन आशीर्वाद दे रही थीं। सूरज, जो अब धीरे धीरे ढल रहा था, लंबी परछाइयां डाल रहा था, जिससे परिदृश्य गर्म रंगों में रंग गया था। दूर की गर्मी की धुंध पर प्रकाश जगमगा रहा था, जिससे सड़क पर मृग तृष्णा जैसे भ्रम पैदा हो रहे थे। छोटे शहर और गांव तेजी से पीछे छूट रहे थे। हर एक की अपनी एक अनूठी विशेषता थी। सड़क पर पसरा एक हलचल भरा बाजार, धूल भरे मैदान में क्रिकेट खेलते बच्चों का झुंड, एक लोहार के हथौड़े की तालबद्ध आवाज। ये क्षणिक झलकियां जीवन के खुलते दृश्यों को प्रस्तुत कर रही थीं। बड़े शहरों से परे गुजरात की जीवंत धड़कन की एक तस्वीर पेश कर रही थीं। इस स्टेट हाईवे पर गाड़ी चलाना एक सहज संक्रमण जैसा लग रहा था। पहाड़ी रास्तों का एड्रेनालाइन शांत हो गया था। उसकी जगह शांतिपूर्ण प्रगति की भावना ने ले ली थी। कार में बातचीत आसानी से चल रही थी। बीच बीच में आरामदायक खामोशी भी थी, क्योंकि हम में से हर कोई सामने आ रहे नज़ारों को आत्मसात कर रहा था। जैसे जैसे हम दंसुरा की ओर बढ़ रहे थे, आकाश नारंगी, गुलाबी और गहरे बैंगनी रंगों के एक कैनवास में बदल गया। हवा थोड़ी ठंडी हो गई, जिसमें ताज़ी जुती हुई धरती की महक थी। सामने से आने वाले वाहनों की हेडलाइट्स बढ़ती हुई शाम को चीर रही थीं, जिससे रोशनी के क्षणिक क्षण पैदा हो रहे थे। हवा में एक उम्मीद सी थी, अपने गंतव्य तक पहुंचने का वादा और एक दिन की खोज के बाद रात के आराम का सुख। ये गुजरात स्टेट हाईवे अपने शांत तरीके से अपनी खुद की कहानी कह रहा था, जुड़ाव की कहानी, व्यापार की कहानी और एक समृद्ध और विविध परिदृश्य की पृष्ठभूमि के खिलाफ खुल रहे रोजमर्रा के जीवन की कहानी। ये पहाड़ी दर्रों जितना नाटकीय नहीं था, लेकिन इसमें अपना ही एक आकर्षण था, सड़क का एक शांत संगीत जो हमें गुजरात के दिल से आगे बढ़ा रहा था। Gujarat State Highway Serenade. The hum of the tires on the smooth asphalt of the Gujarat State Highway was a steady rhythm, a stark contrast to the winding, often rugged, embrace of the Aravalli mountain roads we had just left behind. Here, the landscape opened up again, a tapestry woven with emerald fields stretching towards the horizon, punctuated by the occasional cluster of whitewashed houses with their brightly colored doorways. The air, though still carrying a hint of the dry heat of early June, felt different, less wild, more domesticated. Our tea break stop, just a little while ago at that roadside dhaba, had been a quintessential Gujarat highway experience. The aroma of strong milky chai mingled with the spicy fragrance of frying snacks. Truck drivers, their faces etched with the stories of long hauls, exchanged boisterous greetings and shared updates over steaming cups. The air buzzed with a casual camaraderie, a sense of shared journey on the arteries of the state. That brief pause had not only refreshed us physically, but also offered a glimpse into the everyday rhythm of life along these vital roads. Back on the highway, the scenery unfolded like a film reel. Tractors rumbled in the adjacent fields, their drivers shaded by colorful turbans. Women in vibrant saris walked along the shoulder, carrying bundles on their heads with an effortless grace.
The occasional brightly painted truck, adorned with intricate folk art, and the ubiquitous horn "OK please" sign, thundered past, its air horn a brief but assertive call. Small temples and roadside shrines, painted in cheerful hues and adorned with marigold garlands, offered silent blessings to the travelers passing by. The sun, now beginning its slow descent, cast long shadows, painting the landscape in warmer tones. The light shimmered on the distant heat haze, creating mirage-like illusions on the road ahead. Small towns and villages flashed by, each with its own unique character, a bustling marketplace spilling onto the roadside, a group of children playing cricket in a dusty field, the rhythmic clang of a blacksmith's hammer. These fleeting glimpses offered vignettes of life unfolding, painting a picture of the vibrant pulse of Gujarat beyond the major cities. Driving on this state highway felt like a gentle transition. The adrenaline of the mountain roads had subsided, replaced by a sense of calm progress. The road was straighter, the turns predictable, allowing for a more relaxed pace. The conversations in the car flowed easily, punctuated by comfortable silences as we each absorbed the unfolding scenery. As we continued towards Dansura, the sky transformed into a canvas of fiery oranges, soft pinks, and deep purples. The air cooled slightly, carrying the scent of freshly tilled earth. The headlights of oncoming vehicles cut through the growing dusk, creating fleeting moments of illumination. There was a sense of anticipation in the air, the promise of reaching our destination, and the comfort of a night's rest after a day of exploration. This Gujarat State Highway, in its own unassuming way, was telling its own story, a story of connection, of commerce, of everyday life unfolding against the backdrop of a rich and varied landscape. It wasn't as dramatic as the mountain passes, but it held its own charm, a quiet serenade of the road, guiding us onward through the heart of Gujarat's stop, just a little while later, was at a small, unassuming dhaba by the roadside. The aroma of freshly brewed chai mingled with the faint scent of spices from the kitchen. We sat on a charpoy, sipping hot sweet tea from small glasses, watching the occasional truck rumble by. It was a moment of perfect stillness, a chance to truly absorb the shift in the landscape and the rhythm of our journey. The quiet chatter of the dhaba owner and a few locals provided a gentle backdrop to the vast open fields that now surrounded us. Modasa, being the district headquarters of Aravalli district in North Gujarat, has been a focus for infrastructure development, particularly concerning its road and rail connectivity. While a specific story of a single highway might not be readily available, we can piece together a narrative of significant projects and their impact on Modasa's connectivity. Here's a story from the dashcam's perspective, incorporating your call to action at the end. The digital eye blinked to life as the engine roared. Another day, another stretch of the Modasa mentioned a connecting town if known, otherwise just state highway. The sun was just beginning its climb, paint all. The swaying of the trees lining the road, the occasional flock of birds taking flight, the vibrant colors of a roadside temple flashing by. A group of school children, their uniforms bright against the dusty path, walked hand in hand towards their school. A sense of everyday life unfolded in front of the lens. Then, a bit of unexpected drama. A stray dog darted across the road, causing the vehicle to brake sharply. The camera shook momentarily, capturing the brief flurry of movement and the driver's muttered exclamation. Thankfully, the dog made it safely to the other side, and the journey continued. As the sun climbed higher, the heat began to shimmer off the tarmac. The landscape shifted, giving way to small towns with bustling marketplaces spilling onto the roadside. The camera lens caught glimpses of colorful saris, vendors selling fresh produce, and the lively chatter of the locals. Later, as the day wore on, the traffic thinned out. The long stretches of highway offered a sense of peaceful solitude. The hum of the tires on the asphalt became a constant drone, a soundtrack to the passing scenery, fields giving way to more arid land, punctuated by the occasional wind turbine spinning lazily in the distance. Finally, as the sky began to bleed into oranges and purples, the journey neared its end. The lights of an approaching town twinkled in the distance. The dashcam, a silent observer, had faithfully recorded another segment of life on the Modasa Gujarat State Highway, a tapestry of everyday moments, small encounters, and the ever-changing landscape of Gujarat. Its digital memory card now held another story, waiting to be reviewed, a silent witness to the journey. If you enjoyed this glimpse into a dashcam's view of Gujarat, subscribe to my channel and press the bell icon for more stories and road trips.